Hello everybody, welcome to iExamB's Legal Bee. This is Amrita, your law faculty here at iExamB. Embrace the iExamB learning experience with us, and for that don't forget to subscribe to Legal Bee. Legal Bee is the exclusive law channel of iExamB. iExamB के law channel पे आपको law से related सारे ही updates मिलते रहते हैं. We keep on bringing the new legal current affairs discussion videos, content and also strategic exam preparation videos. We provide online courses for various examinations at iExamB. उसके सारी details आप www.iexamb.com पे जाके check कर सकते हैं. Courses के demo भी आप जाके activate कर सकते हैं. कोई भी query हो सीधा आप हमें call कर सकते हैं on 9205524028 and also you can email us on hello@iexamb.com. In this video today, I'm going to discuss about the criminal law reform which is going to commence from 1st of July 2024 in India. There is a very major criminal law reform that is going to take place in India. I would say that it is going to take place because there is a difference between commencement and enactment. ये काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कमेंसमेंट डेट क्या है, एनैक्टमेंट डेट क्या है. फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एनैक्टमेंट डेट क्या है 26th ऑफ नवंबर, कमेंसमेंट डेट क्या है 26th ऑफ जनवरी, ऑफ कोर्स 1949 and 1950 respectively. So when we talk about these three criminal law bills which have become an act as they have received the presidential assent on 25th of December 2023 itself, but उनका commencement अभी भी बाकी है. So अब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी करके उसकी डेट दे दी है, that is 1st of July 2024. ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है, but obviously centuries have gone by and now we need change. Change is the rule of nature and law is the medium or the tool for a major change in the society. So this is need of the hour and we all need to welcome it with a positive attitude. So इसी वीडियो में हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. What are the challenges for the implementation? What are the positive points as well? And what are the negative points? We will try to have an outlook about this commencement. Before we go ahead, I would like to announce about the offer that is ongoing at iExamB. That is 50% discount is available on all the courses. It is an exam excellence sale which we are celebrating at iExamB to celebrate the success of iExamB and the students who have qualified various examinations, SEBI and all the examinations. There are 750 plus selections due to iExamB in 2020 to 2024. So ये इस खुशी की एक जो करंट सेल चल रही है, जो 50% डिस्काउंट अवेलेबल है सारे कोर्सेज पे. सो इसके लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं सिलेक्शन एंड इमीडिएटली एनरोल कर सकते हैं. डोंट मिस द ऑफर, इट इज़ वेरी एक्साइटिंग ऑफर एंड सारे कोर्सेज तो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर ही सकते हैं. As I told you that these acts have already been enacted on 25th of December 2023 when the presidential assent was received. What is the procedure? First, the bill is introduced in the houses. लोक सभा राज्य सभा में पास होने के बाद presidential assent मिलने के बाद ये bills act बन जाते हैं. But what about the implementation? Implementation, which we talk about the commencement, many times the commencement date is quite later than the acts when they are enacted. You can find that in the text of so many laws कि implementation में वक्त क्यों लगता है. Implementation requires time because there are many changes in the laws for which we need to have a setup, and especially अगर हम इन 3 laws की बात करें, so this is a very major reform. The legislations that we have in India, IPC, CRPC, evidence, they have been for a long period of time. 1800 से हमारे पास ये legislations हैं, 1973 से CRPC भी है. तो अब अगर हम उन्हें change कर रहे हैं 2024 में, so definitely हमें इसके लिए time की ज़रूरत है. It is not going to be a major change. It is not going to be very easy. It's a major change, so it is not going to be very easy. That is for sure. And also अगर हम official commencement date दे रहे हैं 1st July, so ये officially लागू हो जाएगा, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा टास्क है. उसके लिए काफ़ी सारी एंसिलरी चीज़ें हैं. कंप्लीट सिस्टम में चेंज आएगा, लीगल सिस्टम, पुलिस सिस्टम, lawyers, judges, police officials,
citizens, everybody has to become aware of their rights, the punishments, they have to be aware of the procedure, and the training is obviously required. So this is going to be a gradual process and will be taking time. Even if the date is announced, this will be taking time. यानी कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया, ऑफिशियली ये लागू हो जाएगा, लेकिन ग्रेजुअली चीजें इंप्लीमेंट होती रहेंगी, ये आपको समझना होगा. This is the notification. Ministry of Home Affairs is obviously the authority to issue this notification, which was issued on 23rd of Feb 2024. I will read it out. In the exercise of powers conferred by subsection 2 of section 1 of the Bharatiya Nyaya Sanhita. This is what is IPC. Central government hereby appoints the first day of July as the date on which the provisions of said Sanhita, except the provision of subsection 2 of section 106, shall come in force. Now all the provisions are coming in force except one, which you have to remember. It's very important to remember such kind of things. You know that the hit and run has been talk of the show in news also. So उसके कुछ issues के वजह से उसको अभी hold पे कर दिया गया है. ये भी आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है. That we will be discussing in a separate video. Today we will just focus on the commencement of the 3 laws. Then this is another notification for Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023, and according to that also same date has been given for Evidence Act. This is Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. Again same date has been given for CRPC, the new CRPC as well, except the provisions of entry relating to section 106. अब CRPC और IPC की अगर हम बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है. वी ऑल नो दैट प्रोसीजरल एंड सब्सटेंशियल लॉ. सो उसी तरीके से अगर हमने कोई प्रोविजन होल्ड किया है जो भारतीय न्याय संहिता से रिलेटेड है, तो उसकी एंट्री कहीं ना कहीं शेड्यूल में होती है. सो दैट विल ऑल्सो बी हेल्ड एट द सेम टाइम. So these are the official notifications which are coming in the Gazette. Many times we are not aware of these Gazette notifications which are very essential part for the commencement. If you know, interpretation में ये सारे terms आपने पढ़े होंगे in your LLB. What is commencement? And इसमें operation भी एक term होता है. Operation is that whether that part is operative or not. In that you have retrospective operation, prospective operation and so on. So ये सारे practically implementation of law की हम लोग बात कर रहे हैं. Now coming to the positive points about these laws, these are a very big change as they are replacing the colonial legislations. You can see 1872 Evidence Act, IPC 1860, ये काफ़ी old laws है, British laws है, इसलिए colonial legislations है जो colonial mindset के साथ चल रहे थे. काफ़ी सारे offenses जो अब हमारे लिए obsolete है, या कुछ offenses जो हमें अभी ज़रूरत नहीं है, उन सबको निकालना बहुत ज़रूरी था. हर बार हम अमेंडमेंट तो नहीं कर सकते. सो द मेजर चेंज हैज़ टू बी ब्रॉट एंड इट हैज़ बीन ब्रॉट अबाउट. सिस्टमैटिक नंबरिंग दी गई है, ABCD वगैरह हटा दिया है. इट हैज़ बीन मेड ईजी टू रिमेंबर द सेक्शन नंबर्स एज वेल नाउ. लाइक अर्लियर यू हैव टू रिमेंबर द अमेंडमेंट्स, ABCD. रेप के सेक्शंस अगर आप देखेंगे उसमें कितने सारे अल्फ़ाबेट्स आ चुके थे. तो देखा जाए तो ये एक टीडियस टास्क तो है ही. सो अब उसको काफ़ी सिस्टमेटाइज किया गया है, स्ट्रक्चर प्रॉपर कर दिया गया है, नॉर्मल प्रोविजंस को ऐड किया गया है विच इज़ द नीड ऑफ द आवर इन ऑल द 3 लॉज, वेदर इट इज़ टेक्नोलॉजी वाइज, ऑनलाइन सिस्टम, AV मीन्स को प्रमोट किया गया है, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को प्रमोट किया गया है, डिले को काफ़ी ज़्यादा कर्टेल करने की कोशिश की गई है बाई प्रोवाइडिंग स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस फॉर ऑल द थिंग्स इन प्रोसीजरल मैटर्स स्पेशली. देन द पनिशमेंट्स, new provisions relating to different punishments like for example community service has been added. सेडिशन को रिमूव किया गया. सो आज की सोसाइटी के हिसाब से जो चीज़ ज़रूरी है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं. स्पीडी ट्रायल पे फोकस किया गया है, टाइमलाइंस है जजमेंट के लिए, स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस, FIR के लिए 0 FIR, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं. अगर आप पढ़ेंगे डिटेल में यू विल गेट एन आइडिया अबाउट इट एंड इट इज़ गोइंग टू गेट इम्प्लीमेंटेड. सो स्टार्ट स्टडिंग द न्यू ड्राफ्ट्स. Now coming to the challenges. Now there are some criticisms as well. Obviously there are positives and negatives of some things. Legislature had a golden opportunity to change the laws completely. They have done that. But still if we see that majority of the changes are not made out. ये भी अगर हम चीज़ देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें फिर भी मॉडर्नाइज की गई है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की गई है.
तो कुछ क्रिटिसिजम्स ऐसे भी है कि ये तो अमेंडमेंट करके भी हो सकता था, वैसे ही चेंजेस आए। कंप्लीटली उसको चेंज किया है, ये काफ़ी मेजर चेंजेस है ऐसा नहीं है। सब्सटैंशियल चेंजेस थोड़े थोड़े किए गए हैं, बट ऐसे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ चेंजेस नहीं है जो आ भी सकते थे एज पर द नीड ऑफ द आवर। एंड कुछ चेंजेस ऐसे भी हैं जिनके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी है। फॉर एग्जांपल बेल प्रोविजंस को काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, सो प्रिजन्स में ओवर क्राउडिंग बढ़ जाएगी, ऐसे भी कुछ रेपकेशंस इसके हो सकते हैं। ट्रेनिंग्स, अब चैलेंजेस क्या होंगे, आपको काफ़ी सारी ट्रेनिंग देनी होगी। पुलिस ऑफिसर्स को, लॉयर्स को तो अपने आप ही अपनी ट्रेनिंग करनी होगी, एंड द जजेस। All these people who are going to deal with these laws directly in a day-to-day basis need to have a good training. They need to learn the laws with section numbers as well. Balancing the old and new provisions is a challenge, because old provisions and new provisions, I'm not just talking about the section numbers, but there are so many changes. Not only the section numbers, but everything, whatever has changed, or sometimes there is just change in section number, but द थिंग्स हैव बिकम कन्फ्यूजिंग। सो वो सब चीज़ों को समझने में और उसके साथ अडेप्ट होने में काफ़ी टाइम लगेगा। इट विल नॉट बी लाइक 1 जुलाई से सब एकदम से चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, फोरेंसिक एग्जामिनेशंस को काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया गया है, तो उससे रिलेटेड हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए ताकि हम स्पीडीली वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। Technological advancement and development is very very important now, because since we are saying that we are going to use all these things, so we need to have that much framework. We are still in the phase of developing it, so again that will also take time practically. Uniformity in application of new law across all the states and union territories, this is also very important. We have made it applicable, but it has to become uniform in each and every state and union territory. So that has to be ensured by the state governments as well. It's not just that the central government, but the state governments also need to play a very important role in this. And of course, we citizens. Public awareness and acceptance is very, very important for such kind of laws. Because it is true that whenever a new law comes, it is not very easily accepted by the society. There is always objections, but it is need of the hour. And we need to accept it positively. If there are some problems, amendments can be carried out, no doubt in that. जैसे हिट एंड रन पर अभी डिबेट चल रहा है, so इस तरीके की चीज़ें हैं। पब्लिक को अवेयरनेस, मासेस में एजुकेशन, इस चीज़ के बारे में ज़रूर आनी होगी एंड आएगी भी, दैट इज़ नो डाउट, बट दिस थिंग इज़ गोइंग टू टेक टाइम. So this was all that I had to add about the new criminal law commencement that is going to take place from 1st of July. If you want to add something or you have any doubts, do reach out to us directly in the comment section of this video and prepare 50% faster with us for any examination at iExamB. Thank you everybody.